Hello students, good morning. Students, today is 5th November 2020. Your chapter 4 business services was going on. In the last class I have started principles of insurance. I have taught 4 principles in the previous class. So today I want to continue it from the 5th principle. So 5th principle of insurance is, that is subrogation. First listen about it. What is subrogation? You know about that the policyholder has taken the insurance to uncertain future. For uncertain future, it means in future if there is any type of the loss due to the reason that has been taken by the insurance policy, so the insurance company, it means the insurer, will settle the claim. Okay, so at that time when the insurance person has settled that claim, so after that there is no assets, there is no rights to the insured person to use that type of the assets. For example, here I want to tell to you, if an insured person, if any person has insured their car and car has been stolen, so at that time the insurer, it means the insurance company, has settled the claim. अगर कोई पर्सन है जिसने इंश्योरेंस कंपनी से कार इंश्योरेंस लिया है और वो कार हमारी क्या होती है, चोरी हो जाती है, ओके, एंड इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस क्लेम का पेमेंट आपको कर देती है, ठीक है. सो आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सर्चिंग, कार हमें मिल जाती है. ओके, कार जब सर्च की जाती है ड्यू टू एनी रीजन, सो कार हैज़ बीन फाउंड आउट. सो एट द टाइम ऑफ that thing, when the car has been find out, so the insured person, it means जिसने इंश्योरेंस लिया था, जिसको क्लेम की पेमेंट हो चुकी है, उसका उस कार पर कोई भी राइट्स नहीं रहता है. ओके, एट दैट टाइम ऑल द राइट्स दैट हैज बीन ट्रांसफर टू द इंश्योरर, इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं उस कार को यूज करने के, उस कार को सोल्ड आउट करने के. ओके, सो दैट टाइप ऑफ द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द सब्रोगेशन. सो हियर यू कैन राइट इट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the insurer gets all the rights against the third party, with respect to the subject matter insured, after compensating the loss of the insured. Okay, so here it has been given as like a right has not relates on the that insured person who has taken the insurance policy, यानी कि जो भी राइट्स होते हैं उस एसेट्स को यूज करने के इंश्योर्ड पर्सन के पास नहीं जाते हैं जब वो क्लेम सेटल हो जाता है. ओके, सो आई वांट टू राइट हियर द एग्जांपल रिलेट्स फ्रॉम कार एज लाइक, फॉर एग्जांपल, if an insured car has been stolen, comma, then the insurer will compensate the loss as the car was covered by insurance. कार हमारी क्या थी, कवर्ड थी इंश्योरेंस के थ्रू, इंश्योरर के थ्रू. ओके, however if the car is recovered later, comma, then the insurer will have
then the insurer will have all the rights on that car. Okay, why? Because the insured should not be allowed to make any profit by selling the lost car being recovered. Okay, so here you can also write this is because the insured should not be allowed to make any profit by selling the lost car being recovered. Okay, it means जिसकी वो कार थी उसने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया बिकॉज दैट पर्सन हैज लॉस्ट देयर कार. Okay, but at the time of the recovery, at the time of the recovered car, अगर वो कार हमारी जो चोरी हो गई थी मिल जाती है, सो उस पर उस इंश्योर्ड पर्सन का कोई भी हक नहीं रहेगा. एट दैट टाइम द इंश्योरेंस कंपनी विल टेक ओवर. सो दैट टाइप ऑफ द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द subrogation. Okay, now students, I want to tell to you about the next principle, that is contribution. So listen carefully. According to this principle, insurer who has paid the claim amount under an insurance policy has the right to recover the proportionate contribution from the other insurer the insured can make from the it is sufficient. Here it has been told to you here, according to this principle, insurer has paid the claim amount under an insurance policy, has the right to recover the proportionate contribution from the other insurer. Here in this principle, it has been told to you, if any type of the insured person who has taken more than one policy from the different types of the companies for the insurance of same property, यानी किसी इंश्योर्ड पर्सन ने किसी एक सेम प्रॉपर्टी के लिए एक से ज़्यादा पॉलिसी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से ली है. सो एट द टाइम ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हम उसकी रिकवरी जो करेंगे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एंड जो उनकी एसेट्स है उसके अकॉर्डिंग हम रिकवरी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स. ओके, सो हियर आई वांट टू टेल टू यू वन एग्जांपल ऑल्सो. For example, Harish insures his house for rupees 2 lakh. With insurer X, and for rupees 4 lakh with insurer Y. ओके, इट मीन्स हरीश ने अपने हाउस का इंश्योरेंस लिया, इंश्योर किया, एक्स कंपनी से 2 लाख का इंश्योरेंस लिया एंड वाई कंपनी से 4 लाख का इंश्योरेंस लिया. ओके, नाउ liability of X and Y will be calculated as follows. Listen carefully. You know about that total insurance has been taken 2 lakh plus 4 lakh is equal to 6 lakh. So
So how can you find out the liability of X and Y? So first see the liability of X is equal to sum insured with X divided by total sum assured. Sum assured with X and divided by total sum assured into actual loss. Okay, सम इंश्योर्ड विद एक्स कितना है, एक्स का इंश्योरेंस कितना था 2 लाख रुपीज का. सो हियर यू विल राइट 2 लाख डिवाइडेड बाई टोटल सम इंश्योर्ड इज 2 लाख एक्स का एंड 4 लाख वाई का. इट मीन्स टोटल इज 6 लाख. ओके, एंड व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लॉस? इट हैज बीन गिवन हियर. द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लॉस okay, one line is not writing here, so you can write it here also. Harish incurs loss for rupees 2,40,000. okay, for rupees 40,000. You will add it that line here. Okay, so actual loss is 2,40,000. You will multiply it here. So after calculation you can find out it that rupees 80,000 that will be paid by the इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर ऑफ एक्स, यानी एक्स इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको कितना 80,000 रुपीज़ की पेमेंट करेगी. एंड व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ वाई? लायबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, सम एश्योर्ड विद एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सम एश्योर्ड विद वाई. वाई मीन्स 4 लाख. वाई का इंश्योरेंस कितना लिया था इन्होंने 4 लाख का. टोटल सम एश्योर्ड इज 6 lakh and actual loss is 2,40,000. So it will be recovered by rupees 1,60,000. It means लॉस की रिकवरी हरीश को कितनी मिलेगी? एक्स कंपनी 80,000 देगी एंड वाई कंपनी 160 देगी. ओके, सो टोटल अमाउंट जो होगी आपकी वो लॉस से ज़्यादा नहीं होगी. इट मीन्स यू कैन नॉट गेट एनी प्रॉफिट ऑन द टाइप ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. यू विल ओनली सेटल योर क्लेम एज पर योर प्रीमियम अमाउंट, एज पर योर सम एश्योर्ड अमाउंट, एज पर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन. ओके, क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा. कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन if any type of the insured person has taken the insurance policies more than one company, so as per their contribution, as per their sum assured, the insurance company will settle the claim of actual loss as per their proportionate ratio. Okay, clear students? Now the last principle is based on the mitigation. Okay, that is the 7th principle, mitigation. Listen carefully. Mitigation means, according to this principle, this is applicable if the insured to take reasonable steps to minimize the loss. So that type of the property, any type of the property who has been insured, which has been insured by the insured person, if at the time of any type of the loss it has been, that person has tried it, so the insurance company will settle the claim. So that principle is followed, that type of thing. For example, इफ़ गुड्स केप्ट इन अ वेयर हाउस, स्टोरेज में या वेयर हाउस में जहाँ भी स्टोर में गुड्स रखा गया है, एंड दैट टाइप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन कवर्ड विद द फायर इंश्योरेंस एंड द वेयर हाउस कैच फायर, वहाँ पर क्या वेयर हाउस में या स्टोर रूम में आग लग जाती है, देन इट इज़ नेसेसरी दैट द इंश्योर्ड मस्ट ट्राई टू रिकवर द गुड्स एंड सेव देम फ्रॉम द फायर. सो इट मीन्स, यानी क्या वो जो इंश्योर्ड पर्सन है वो ये ट्राई करेगा कि उस गुड्स को वो आग से बचा ले. ओके, एंड मिनिमाइज द लॉस और डैमेज, और उसको कोशिश करे कि लॉस जो वो कम से कम हो. सो दैट टाइप ऑफ द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मिटिगेशन. सो राइट इट हियर ऑल्सो. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, it is the duty of the insured to take reasonable steps to minimize the loss or damage to the insured property.
Okay, it means the insured will try it. ये नहीं कि उसका insurance है so that person will not try. It is totally wrong as per the principle of the insurance. Okay, so for example, if goods kept in a warehouse are covered by a fire insurance policy and the warehouse catches fire then the insured must try to recover the goods and save them from fire to minimize the loss or damage. Okay, so these were related from the principles of insurance. Okay, so now I want to start the types of insurance. Okay, so your next topic is based on the types of insurance. Listen student, there are basically mainly two types of the insurance. First is based on the life insurance and second is based on the general insurance. Okay, जनरल इंश्योरेंस यू हैव बीन क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स. आप जनरल इंश्योरेंस को 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं. दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड फ्रॉम द फायर इंश्योरेंस, सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड फ्रॉम द मरीन इंश्योरेंस, थर्ड पार्ट इज रिलेटेड फ्रॉम द हेल्थ इंश्योरेंस and fourth part is related from the other insurance. In other insurance you can also divide it in the different parts as like other insurance में क्या आ जाएगा आपका motor vehicle insurance, okay, cattle insurance, crop insurance, sports insurance, etc. So it has been mainly classified in the 2 parts. So here you will write insurance has been classified mainly in 2 parts. First is life insurance and second is general insurance, GENERAL, general insurance. So I am drawing one picture here to understand you relates on the types of insurance. Okay, so types of insurance, it has been classified here. First is life insurance, okay, and second part you can classify here general insurance. Now you can also classify it also. Okay, it has been also classified in the different parts. First is based on the fire insurance, okay, second is marine insurance, third is health insurance, and fourth is based on the other insurance. Other insurance means, for example, first motor vehicle insurance, second is cattle insurance, third is crop insurance, etc. Okay, so we have been classified it here as like a different parts. Clear students? So now I will continue types of insurance from the next class. Okay students.